Good evening, everyone. This is Sudipto, and I welcome you to Parsarchi Defense Academy. And with Shubham, we are going to start this special session. Captain Shubham. Hello, everyone. I'm So basically, he's passed out from NDA and after that from IMA. And today we are going to have a great session, great insight about life in NDA, life in IMA, and many other things. You have asked me a lot of questions, so I'll be your medium to ask those to him, and you'll get your answers through the right person, right? But apologies first. इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि सारे के सारे नहीं हो पाएंगे, टाइम कंस्टेंट है. ठीक है, कभी फिजिकली मिलेंगे हम ट्रैकिंग करते वक्त या कभी, सो ही इज गोइंग टू जॉइन अस सम टाइम, तो उस टाइम पे पूछ लेना बाकी सारे. ठीक है, सो आज जितना टाइम होगा हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, आगे और फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, एंड विल हैव अ फन सेशन. ठीक है, चलो. So Shubham, this is your first time you're facing an interview like this? Yeah, this is the first time that I'm facing an interview, and I'm interacting with so many of the Fauji aspirants individually. बहुत लोग मिले हैं. I've interacted with lot many juniors of mine, school time juniors. But this is the first time that I'm meeting a group of aspirants, and around 50 people are seeing you. Oh God. But so, you laid 400, 500 people, so that's not a big thing. Right, so I just wanted to know, like before joining Fauj, there is one of the question asked by Samruddhi and Amisha. Okay. So they asked कि यार फौज में जाने से पहले ना कुछ होता है दिमाग में कि फौज ऐसा होगा, we have certain kind of dreams कि हम जाएंगे यूनिफॉर्म पहनेंगे ऐसी चीजें होंगी. So after joining the Fauj, what was your change in that mindset, and पहले क्या था? Okay. The thing is, when I was in my 12th standard, since I did my schooling from APS Delhi Can, तो मतलब अभी बहुत लोगों को लगेगा कि APS मतलब कि पहले से ही आर्मी एनवायरनमेंट देखा होगा मैंने, बट इट वाज नॉट सो. इट वाज अ नॉर्मल पब्लिक स्कूल द वे जैसे आप लोग पढ़ रहे होगे. ठीक है, तो आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट कि यस कैसी होती है फौज. आई जस्ट सीन द पीपल इन यूनिफॉर्म एंड आई गॉट मतलब अनडाउटेडली आई गॉट चार्म्ड बाय देम. So I decided that I'll join the army, and my inclination was more towards the army and not the Air Force and the Navy, primarily because of the reason कि मैं APS में था and I used to see people in army uniform. ऐसे ही जैसे आज मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे ही कोई कैप्टन मेजर एंड कर्नल साहब लोग आते थे ऐसे मोटिवेट करने के लिए. So I'm a product of that. So but the thing is, when you join the army, when you land into the academy, and subsequently when you get commissioned, the life changes a lot. It's with the uniform, with the aura of the uniform comes a lot more responsibility on your shoulders. And तो मतलब जैसे पहले सोचा था दिमाग में जो पिक्चर थी फौज के लिए, वो चीज चेंज हुई या वो वैसे ही है और यू आर एंजॉयिंग लाइफ इन द सेम वे यू थॉट? I'm enjoying it in a much better way because वो मुझे नहीं पता था कि हाँ I'll get so many brothers. The first thing and the best thing that I've got after joining the Forge is that in every city of India, I have a friend of mine. I have a brother of mine. तो मतलब anything मुझे मतलब कभी भी दंगे हो जाए कभी तो भी भाई तो कहीं से भी आ जाए तो हर when शहर you में. like get into the academy ना तो and when you train with your course mates for 3 years, they are not just your course mates, they become your brothers for life. So that is the thing that Forge gives you. It gives you a family beyond the blood. That's the thing. Right. So as you talked about your course mates and 3 years life in NDA and 1 year in IMA, so देखो क्या है ना, IMA कैसे जाना है, NDA कैसे है, सबको पता है. NDA दो, ये करो वो करो, SSB तो जाओ. But we do not know about the life that you see inside, that someone who has actually faced or who is inside can tell us. So हमें एक अच्छा खासा आइडिया जानना है. तो पिक्चर इट फॉर अस कि हमारे दिमाग में इमेज बनने लग जाए कि ऐसा है NDA की लाइफ. And you can tell us some stories inside के मजेदार किस्से, किसी कुछ किया होगा अंदर तुमने मजेदार, तो we would like to hear from about those. बिल्कुल. So guys, NDA IMA 4 years and किस्से इतने हैं, किस्से are so many that if I start telling you, my entire life is less for that. So
क्योंकि एक एक दिन एंड द मेमोरीज आर सो फ्रेश कि आई रिमेम्बर अ इंसिडेंट, मैं एक इंसिडेंट कोई छोटा सा याद करूंगा एंड मैं मुझे उसके आगे पीछे एवरीथिंग आई जस्ट दैट डे विल जस्ट फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माय आईज, राइट। सो हमें वैसे ही एक दिन चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑल दोज हु आर एनडीए एस्पिरेंट्स, इसमें अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि 3 साल बहुत ज्यादा है ट्रेनिंग, 3 साल तो किस किस को लगता है ऐसा, किसी 3 को years आइडिया is too है? much. अरे कमेंट्स पे एक्टिव रहो यार, सो मत जाओ, हम भी सो जाएंगे फिर। ओके, नो सर, नो सर, नो टॉट। ओके ओके, 3 तो कम है। 3 अच्छा, तो कम है, ओके। हाँ 10 साल रगड़ो इनको। ओके ओके। तुम्हारे लिए स्पेशल स्पेशल वो आएगी वहाँ। दैट्स व्हाट आई फील, 3 तो कम है बिकॉज आई डोंट गेट, मतलब ट्रेनिंग वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। बट वो 3 साल वही ऐसे होते हैं ना, व्हेन यू गेट देयर इन द एकेडमी ऑन द फर्स्ट डे यू फील कि यार ये किस जगह पे आ गया, मतलब वेयर एम आई, देयर इज नोबडी whom I know, and the moment you reach the academy some people will come and take you, मतलब जितने भी बैचमेट्स आए होंगे उन सबको लेके जाएंगे, you will get the haircut और you will get the फौज वाला यूनिफॉर्म। हेयर कट की वजह से नहीं लगता, मतलब सम पार्ट ऑफ यू इज गॉन, इज मिसिंग, मतलब यू फील दैट, ये क्या हो गया। ठीक है, एंड ये कंप्लीटली चेंज, तुमको अलग से वो जो फौज की यूनिफॉर्म है यू विल स्टार्ट वेयरिंग दैट इवन, मतलब एवरी टर्म ऑफ योर लाइफ इज डिक्टेटेड कि तुम्हें सुबह सुबह कब उठना है, व्हाट टू वेयर, वेयर टू गो, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, एवरीथिंग इज डिक्टेटेड एंड यू लिव in the way the army wants you to live, and probably this is the best way, that is the way मतलब we all are looking forward in our lives to live. तो everything just मतलब ना just passes like a blink of an eye. 3 साल पहले दिन तो लगता है कि यार कैसे निकलेंगे, how will I survive in this strange place for 3 long years, but once you start training with your coach mates, तो अब सुबह morning you, I'll just tell you, share with you the daily routine that is there in the academies. Officially morning you wake up at 5:30. You're supposed to be there for the morning muster where your seniors will just check कि हाँ you're wearing the dress correctly. Then all of you will stand, you will recite the NDA prayer, and उसमें क्या होता है कि the junior, जो junior most courses होते हैं, like जब हम थे first second termers, तो the first termer goes in the center and he is to recite the NDA prayer and rest others repeat after them. तो and whosoever forgets, जैसे फर्स्ट टाइमर गया, he starts reciting, obviously you don't remember, so if you forget, then on the other side are the fifth timers who are standing. So the only ishara for the that first timer is from the eyes of the third timer ki just go behind them. And then rest of the people will recite the prayer and go for शिवाजी द that. बॉस जैसा वो ऑफिस में जाओ टाइप का, आओ आप पीछे, हाँ आपका हिसाब वहां पे होगा। हाँ। तो सो टॉक अबाउट सम रगड़ा। साइकिल चलाई है सबने? साइकिलिंग पसंद है ना सबको, तो एनडीए में आईएमए में जहां जाओगे ना साइकिल मिलेगी बहुत अच्छी, मतलब इट्स अ सुपर बाइक, ठीक है, यू कॉल इट बाइक, यू डोंट कॉल इट साइकिल देयर, इट्स अ बाइक एंड यू डोंट हैव टू वरी अगर उसमें हवा नहीं है तो प्रॉब्ली यू विल फील लाइटर बाय लिफ्टिंग इट, ठीक है, बस। और साइकिल की चेन चढ़ाना अपने आप सीख लेना क्योंकि वो फौजी साइकिल है, चलने की उनको आदत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज दी पार्ट, उस साइकिल पे आप नहीं बैठे होते हो, साइकिल आपके ऊपर होती है। एंड रगड़ा इज लाइक आप यू विल हैव योर कोचमेट्स, उनमें से एक कोई गलती करेगा एंड ऑल ऑफ यू विल गेट दैट। I'll just share with you guys one incident of us in NDA first term. NDA में when we reach there, तो generally in the initial days what happens is कि all the coach mates जितने भी हैं, तो there is one senior who is a fifth term cadet. It's and their appointment is a sergeant. So that sergeant was assigned to us कि okay, since we were new, तो all of they will be together at one place और ये इनको मेस में खाना खाने के लिए ये साथ में जाएंगे, इनका कुछ since uniforms are issued and formalities are there, तो साथ में जाना है इनके साथ। तो it was a Sunday and sergeant had told okay 9 o'clock all of you would be here
in your muftis. Muftis is your formals. So हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए, and one of our course-mates was missing. He is not there. अब okay, sergeant tells, okay, you go and find him. So that you guy went to find him, and that you guy did not come back. तब तक जब तक वो बंदा नहीं आया, तब तक we were all okay. You guys don't know the value of time. If I've given you certain orders, you're not following it. You guys are just first timers and want to just boss around in the academy, bend all of you. So you start, doing the push-ups and all the funny activities. So it starts happening. It went on for around 10:30, 1-1.5 घंटे चला हमारा session. Then that sergeant, he also felt hungry, probably. तो उसको लगा यार इनको भी खिला देता हूँ खाना, खुद भी खा लेता हूँ. उसने बोला okay, get up, wash your faces, make your rigs proper, we'll go to the mess. We start walking towards the mess, and there you see the two gentlemen who are missing. वो अपना mess में आराम से इडली डोसा सांभर is going on. Okay. उसके बाद again वो दोनों आए, फिर हम लोग आए. Okay, all of you have had food. Yes, sir. Somebody wants to have it again? No, sir. Okay. Go change to PT, right? We'll go to the rope session. But that was the day, and it was just probably 3rd or 4th day in the academy. अच्छा. That day we saw our entire battalion not on our feet while rolling. उस दिन हमें पता चला कि 4 पैर पे भी इंसान अभी चल सकता है. We are not that developed yet. Okay. Primitives. Yes, we are yet the primitives. So those were the junior terms. So बहुत किस्से हैं ऐसे ही. They just keep flashing. So how is the relationship between the juniors and seniors there? Like one of them asked, "Sir, senior में से कोई आपका friend होगा?" तो senior में से कोई दोस्त होगा तो बच जाते होंगे ऐसे रगड़े वगड़े से. अगर कोई friend हो जाता है ना senior, तो जो उसके coursemate होते हैं who get to know कि okay, this guy is his school type or friend या some known, then that senior doesn't do anything, but he makes sure that you get trained very well by others. अच्छा, मतलब और ज्यादा लगती है तो दोस्त मत बनाओ. अगर पता है, if you know somebody, keep it to yourself. If you know somebody, keep it to yourself. Okay, I know you. But keep it very personal. ठीक है, don't let it come out in the open unless you want to train harder. Okay. Even I had my school senior in India when I joined in the first term, and पता चल गया एक दिन, one of the seniors got to know, and that senior was like super 6th term cadet, na? Acha. So when he was in his 5th term, he was a very dreaded senior kind of thing. So he used to punish the juniors very much. Acha. So one of his juniors got to know that I'm his school type, and I was like, okay, we'll take the revenge. Okay. So the funniest movement is this, starting with 2-3 दिन में. No, the fun never stops. Oh. Fun पूरे 4 साल नहीं बंद होता है वहाँ पे. अच्छा. Okay. That's great यार. Cappuccino पसंद है सबको? Everybody likes cappuccino ना? कॉफी की बात हो रही है. हाँ, कॉफी. CCD वाली यार. हाँ. ठीक है. कोल्ड कॉफी. यस. कोल्ड कॉफी का किस्सा बाद में सुनाता हूँ. किसी ने कीचड़ वाली कॉफी पी है? नहीं पिया हो तो कोई बात नहीं, 2 साल बस. It was NDA 6th term. Okay. And 6th term में we have like our service classes. So we get into the combats, and then हम लोग jungles में we go for our, हम सुबह चले जाते हैं 6 o'clock. You go there with your rifles and your pack, and you'll have some battle drills and all, and it'll go until around 2 o'clock. ठीक है. So the procedure is that you're supposed to go there, and a lecture is supposed to be conducted. Then a demo is supposed to be given by the instructors. After that, if you have any doubts, they'll clarify. This is the official procedure. However, the way it happens is lecture, which is of 40 minutes, will be completed in 10 minutes. Demo will be completed in next 10 minutes. And after that, the entire day is for the clearance of your doubts.
एंड एनडीए में डाउट्स ना ऐसे नहीं क्लियर होते जैसे अभी जूम टेलीग्राम पे होते हैं. एनडीए में डाउट्स क्लियर होते हैं. ओके, यू हैव डाउट्स, you put your leg up, hey, and you put your head down, then I'll clarify your doubt. तो अच्छा. अगर तुम्हें डाउट 10 मिनट में क्लियर होता है या 5 मिनट में क्लियर होता है, that is your stamina. Okay. So we were doing our this jungle training. There was some lecture on patrolling and ambush something. So that lecture just उस लेक्चर में हमारी बहुत बुरी हालत हुई थी ना. Somebody asked some very silly doubt again, and हम लोग को बोला okay, so you want to know how should we go there? Yes sir. Okay, we'll tell you how you should go there. तो हम लोग को बोला okay, get into the crawling position. Crawling is like you lie down on the ground, you get onto your arms and start moving so that you're not seen. Okay. Mm-hmm. So and it was a fairly muddy track. उस पे पता नहीं मतलब वीडियो में तो देखा है, कैन रिलेट. किस टाइप का मटेरियल, फीकल मटेरियल तैर रहा है. हाँ, किस हाँ. किस का यू नेवर. तो हम उसमें क्रॉल करते हुए वेंट दे. अब इतना होने के बाद होता ही है कि द लंच इज आल्सो मेस से द लंच इज सर्व देयर एंड वी आर सपोज टू हैव लंच देयर एंड देन गो. एंड ऐसी हालत में थे तो वी थॉट यार विल नॉट हैव लंच. बिना हाथ धोए. नहीं, वी थॉट विल नॉट हैव लंच, हम करेंगे. तो हमने अपनी साइकिल्स उठाई एंड वी स्टार्टेड गोइंग. वन ऑफ द ऑफिसर्स ही जस्ट सॉ इट. ही तो बाइक निकाली भाई ने और अपनी जाके पोस्ट पे खड़ा हो गया. Okay, you guys want to waste food. This food has been prepared with so much of hard work for you guys, and you guys don't want to have it. Go back. Okay, bhai. Okay, take off your helmets. Helmet nikal. You see that coffee? Sir, कौन सी कॉफी? कौन सी coffee? Yeah, take it. That's cappuccino. Clear, bhai. Okay. See, you have Shrewsbury biscuits. Have it. Okay, we'll have it. उसके साथ So we had it. चलो भाई, इससे क्या पता चलता है कि अब ऑफलाइन क्लासेस जब होगी तो जब आप डाउट्स पूछोगे हम भी संडेज को करेंगे ऐसे कुछ. जल्दी क्लियर होगा. हाँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा. The thing that is said is कि दिमाग में खून जाता है इससे. अच्छा. देखा, कुछ फल वल नहीं खाना है. कैपेचिनो. आपने किसका रगड़ा लिया था? मैंने बहुतों का लिया यार. रगड़ा is It's a don't part call of it. it. Yeah, It's a part of part it. of training. मतलब it's a part of more of a mental training than the physical training. Mm-hmm. And it builds not just your stamina, it builds the bond. मैं ऐसे नहीं मेरे पास आज I've got more than 400 brothers. It is because we have trained together, we have rubbed our shoulders together. So और जिन juniors को मैंने रगड़ा दिया है, जिन seniors ने मुझे रगड़ा दिया है, we share that bond very much. So that ragda is a part of your mental, strengthening your bonding, everything, because it's an organization which works on emotional values and the core values. It is not, bureaucrats नहीं है कि paper पे some letter goes and, उस पे कोई action होगा आराम से. नहीं. Okay. So इंडिया के बारे में तो पता चला. Okay, we'll come back to this academy. Academy बहुत हो गया इंडिया में. So guys, the person who is sitting in front of you ऐसे ऐसे ऑफिसर नहीं है. एलएसी में तैनात थे भाई साहब. ठीक है, चाइना बॉर्डर पे. सो ही हैड अ गुड टेन्योर विद द इन्फेंट्री देयर. सो मुझे भी जानना है वैसे तो, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी जानना है. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर? लाइक वी कीप ऑन सीइंग ये फ्लैग मीटिंग्स होते रहते हैं 10 12 15, और चीनियों का वादा उनके सामान की तरह ही होता है ना. कभी रखते हैं नहीं वो. सो दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू नो कि किस तरीके से वहां पे डीलिंग करते हैं एंड व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन. क्योंकि जो मीडिया में देखते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बात है, जो हम पढ़ते हैं दैट इज नॉट एक्चुअल थिंग विच इज गोइंग ऑन. तो वहां की एक्चुअल चीज जाननी. Those who are having SSB, it will help you to understand the matter well. So before I was going to join that place, that LAC, I started reading about 1962 war with China, and that gave me an insight कि भाई the Chinese are something like they'll be very peaceful with you.
they'll show that they're very peaceful, very friendly with you. But they'll be doing something in their hindsight always to make sure that you're not, you do not get to know, and they prepare themselves for a war in a very, discreet manner. So the situation where I was posted was that it's a very remote location. There are no roads. There is no telephone connectivity. So definitely Zoom तो खैर उस टाइम आया भी नहीं था. I did not have even the normal calling वाला 2G वाला ना for the 1.5 years. So they were just 4G phones. So our situation there was something कि even our rations जो हमें खाना होता है आटा दाल चावल, so we used to carry it on our backs and climb the mountains and reach the place जहाँ पे हम रह रहे हैं. So and there was all snow. It was all snow clad. And एक LAC है which is not at all defined. It is called line of actual control, and it is not something that you imagine as कि कोई दीवार होगी, कोई fence होगी, ऐसा कुछ. There is not even a stone walls भी कहीं हैं कहीं नहीं है, ठीक है. So what they do is when they come and they face you, when they come and you are already there, and they see कि okay, you guys are 10 in number and they are 20 or 30 in number, then they'll try to boss you around. So that is their mentality. If they are superior in number, or if they have reached earlier than you, then kuch nahi hoga. There is no issue. Still, they'll try to create an issue. Okay, this much is our land. You have occupied it, illegitimately, and they'll create all such kind of issues. But the day to day इसको कैसे डील किया जाता है? पाकिस्तानी तो उधर सीज फायर करते रहते हैं, ये लोग तो वो भी नहीं करते. ये वो नहीं करते. तो फिर क्या करता है? We have to be ready because they are around 2.5 hours ahead of us. Right. So if it is 6 o'clock there, it means it's just 4:30. 4:30, right? For 3:30. 2.5 hours. Okay. 3:30. 3:30. So we just through the end summary and all वो सब पता चल जाता है their normal routine क्या है, उनका timings क्या है. तो we got to know कि हाँ वो 6 बजे के आसपास उनका दिन शुरू होता है. तो 3:30 we used to be there at the bang on LAC, which was probably 45 minutes steep climb of 85 degrees from the place where I was staying physically. So we used to be active there. मतलब रोज जाना पड़ता था चढ़ के. So where 3:30 used to be active there. तुम संडे मरते रहते हो. So 3:30 we used to be active there with our boys, and we used to like okay, since it was very cold winds ऐसे वहाँ होती हैं कि you can't even speak if you're out of your cap, तो तुम बोल भी नहीं सकते, you will start fluttering. So every 4 hours we'll change shifts. 4 घंटे बाद there will be some other people will come, 10 लोग और आ गए, then you will be relieved. ऐसे चलता था. So someday if they come, if they are less in number, they'll definitely be like okay, hi hello हो गई, gift exchange हो गया. Okay. And photo, they'll also be like हमें यहाँ पे फोटो खिंचवाना है, आप ठीक है, हम भी बोलेंगे आप अपनी साइड में कर लो तो करना है. अच्छा. And we'll do it on our own side. तो वो मीटिंग होती थी. अच्छा. That day गिफ्ट भी देते थे. गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, हम भी देते थे. उनका वो पेन ड्राइव वो मेड इन चाइना वाला. मेड इन they give you like नारियल पानी एंड चाइनीज ईटरीज बहुत सारी देते हैं, सॉसेजेस नूडल्स बहुत खाने पीने का सामान. एंड वी नेवर यूज्ड टू हैड इट बिकॉज़ जहर मिला के दिया तो डर तो लगता था. एक बार कर लिया था ट्राई मैंने. अच्छा. मजाक में वी ट्राइड इट एंड वी फाउंड इट टू बी वेरी डिलीशियस. ओके. फिर क्या जगह दे दी थोड़ी सी? जगह क्यों दे देंगे यार, ओल्ड मॉन्क दे दी थी बस. अच्छा. So once it happened that they came with generally they used to come with their officers of हमारी रैंक के लेफ्टिनेंट कैप्टन्स, तो और उनके साथ उनके जवान होते थे 10-12. Once it happened that their very senior officer came there. It was for the very first time in the past like 7-8 years. पहली बार ऐसा हुआ था कि their senior colonel, they don't have a brigadier rank, they have a senior colonel. अच्छा. So their senior colonel, 2 lieutenant colonel, 3 majors, and all officer delegation type आया इतना. And I was on a different patrol.
मतलब उसी एरिया में, वाज ऑन अ डिफरेंट एक्सेस. So I got the information on the set. I rushed there. By that time, the normal drill that we follow is कि okay, when they have come, since they know Chinese, we know, and mine was a Jat Fauj, तो उनको तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी, ठीक है. तो the normal drill is that we raise our national flag and a banner in which it is written in English and Chinese that you are entering the Indian territory now. Please go back. Okay. So हम वो flag लेके हमारे मतलब जो जवान थे, they were standing and they made a human chain that जब तक मैं नहीं आया था तब तक ये हुआ. And but in the meantime, since they were larger in number, they started pushing. अच्छा. उन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दिया and by naturally this side what they did, इधर जाट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग पे हाथ मार दिया. अब जाट तो जाट होता है, जाटों ने पकड़ा उनको, नीचे गिरा दिया, खूब हुई धक्का मुक्की. फिर उन्होंने ऑथेंटिक इंडियन देसी गाली सुनी होगी. तो जब तक मैं वहां पे वापस आया तो ऑलरेडी वो थोड़ा थक हार के बैठ चुके थे. अच्छा. और थोड़ा सा स्नोफॉल हैड स्टार्टेड एंड दे कांट बेयर इट. ठीक है, चाइनीज सोल्जर्स आर जस्ट लाइक चाइनीज गाइड्स. ठीक. तो वो थक हार के बैठ गए एंड देन देयर लेफ्टिनेंट कर्नल वाज कि ओके, एंड इट वाज जस्ट यू नो हाउ मच ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, जस्ट अ 2 feet वाइड पाथवे, पगडंडी जिसको बोलते हैं, 2 feet वाइड पगडंडी फॉर अराउंड लाइक 500 meters लॉन्ग. अच्छा. सो बस इतना सा कंटेंशन था. दे वर लाइक कि we'll go through this way, and we were like, no, this is our land. You want to go to that peak, you go through your area. We won't let you go. So the lieutenant colonel, he was, you know, very arrogantly, he puts his one hand in his pocket and extends his one hand to me. Okay, captain, we'll go this way through, मतलब ना अपना हमारा वाला जो था. And maybe ठीक है, तुम सीनियर हो गए अपने यहाँ के, मेरे इधर तो नहीं हो. I also put one hand in my pocket and I show the way. No, you go through that. दरवाजा उधर है. ये no, I'll sit here only till the time you do not remove your troops. अच्छा. Okay, you want to sit here, sit. बैठा. He sat for around 2 minutes. Then I saw it was a, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो वो यहाँ पे बैठा हुआ था. And this was a place जहाँ पे कुछ टेंट के पोल्स रखे हुए थे, पैनल के पोल्स थे. And here I was standing. So I just moved around and I took those poles. And since they are ours, तो उसको मैंने ना जानबूझ के थ्रू, अब मतलब जस्ट अबव हिज हेड, आई थ्रू देम टू द माय बॉयज कि जस्ट होल्ड इट, पकड़ो इसको, बैनर में लगाओ. दैट गाय वाज शॉक कि भाई ये क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू बी एग्रेसिव नाउ. तो ये हुआ, क्वाइट थोड़ा सा डरा हुआ. देन वन थिंग दैट ही डिड वाज he'll always, you know, while he was talking to me, since we were standing on this kind of a steep slope, he'll be talking to me and वो push करेगा हल्का सा, and खुद ही push करके he'll extend the hand, be careful. अच्छा. तो it happened like twice. अच्छा. Third time he did the same thing. मतलब जैसे वो गैजेट्स देते हैं उसके साथ वारंटी भी होती है 2 महीने की, वही किया उसने 2 बार ऐसे किया. थर्ड टाइम ही ट्राई टू डू दिस एंड थर्ड टाइम मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने अपनी तरफ खींच लिया. आ ही जाते. And he just rolled down to the Indian side 200 meters down into a nala. अच्छा. और 2 of my boys rushed towards him. And we almost like captured him. अच्छा. जिंदा है वो? छोड़ दिया. अच्छा, छोड़ दिया. हाँ, उसके बाद हुआ कि okay, now your commander is with us. अब तुम बताओ तुम्हें कहाँ से जाना. So they went back. So the LAC was again fun, but it was very much, you know, a risk is always there. You have to fight the weather, you have to fight the enemy, and you need to have your, you know, mental awareness alive. मतलब आई वुड से कि कम से कम ये जो पाकिस्तानी होते हैं ये मारते तो समझ आता है. हाँ, ये लोग कुछ अलग ही है, ये अलग है, दुश्मन है, ऐसा दिखाएंगे नहीं. सो दिस मस्ट बी मोर चैलेंजिंग ना पाकिस्तानियों से डील करने से. पाकिस्तानियों से तो इट इज स्टिल लाइक कि हाँ गोली चलेगी तुम चला दो. हाँ, यहाँ पे दी ऑर्डर्स टू यू या कि यू कैन नॉट फायर. सो हाथ बंधे हुए हैं, बट you still have to be prepared, and you have to be prepared with the sense कि they are
how much force is there they are building across the LAC, since वो ऐसे बनाते हैं कि you do not even get to know. So इस टाइम पे फैमिली के साथ कनेक्टिविटी या एज यू सेड कि वहां से कुछ नहीं हो पाता, हाउ वाज योर लाइफ देयर, लाइक फैमिली फ्रेंड्स? Actually family friends cricket सब कुछ मिस हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है when you and ये छोड़ो, जब छुट्टी आती हो ना and when you start getting down you see the trees, तो लगता है कि you have started entering a new world. तुम्हें गाड़ियाँ, तुम्हें लोग दिखने लगते हैं when you start moving down. बाकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस जो फोन पे, अब यहाँ इट इज़ वेरी सिंपल कि यू पिक अप योर मोबाइल एंड कॉल समबडी, नो वीडियो कॉल कर लो, जूम मीटिंग कर लो, बट इट डजंट हैपन देयर दैट वे. एंड यू कैन स्टिल, आई स्टिल हैव सम ऑप्शन कि हाँ मेरे पास फौजी फोन है, तो ना थ्रू उसके थ्रू मैं कहीं से कुछ सिविल नंबर लेके कुछ कनेक्ट करके, ऑल दो टाइम लगता है, तो शायद मैं बात कर लूँ. बट द रियल प्रॉब्लम इज फॉर योर फैमिली बिकॉज दे कांट connect to you. So they make a bigger sacrifice than you. They have your coffee ठंडी हो जाएगी. So guys, you can throw more questions. Let him have some rest. No, you can continue. अरे तुम भी बैठ गए यार, तुम भी ले लो. I would have loved to do this session, physically someday, because I would have been learning from them. या मंडे को नहीं, संडे को करेंगे, अभी आ जाना. नाउ सी एनडीए का किस्सा हो गया, एलएसी हो गया. नाउ कमिंग बैक टू यहाँ पे ग्रेजुएट एंट्रीज वाले भी है. सो वी वांट टू गेट टू नो अबाउट द लाइफ. मतलब ग्रेजुएट एंट्री के बाद नहीं गए हो, बट लाइफ तो मोर और लेस सेम ही होगी आईएमए में, है ना. सो समथिंग फ्रॉम आईएमए, देहरादून, मसूरी, दैट इज अनदर, है ना. तो ये पुणे में, वहाँ का अलग ही है. मतलब बड़े भी हो गए हो आप. they're very famous मीम भी बन गया होगा अभी तक, तो देखा भी होगा कि एनडीए के ड्रिल स्क्वायर में, नहीं आई माय अपॉलॉजीज, मेरे मुंह से पहले एनडीए निकलेगा यार, सिंस आई एम एनडीए मटेरियल, दैट इज इन माय ब्लड. तो आईएमए के ड्रिल स्क्वायर में जब कैडेट जीसी पैर पटकता है, तो मसूरी में हनीमून मनाने वाले कपल को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फौलाद बन गया. हाँ, ये पढ़ा है. ठीक है, पढ़ा है ना, कितने लोगों ने पढ़ा है? सुना है. अच्छा, सुना है. ओके. चलो, क्या वो फौलाद आप लोग होंगे? एक तो इधर है, एक चूक गया है, अब आप लोगों को बनना है. You guys have it in, do you guys have it in you? देखा है वो पोस्टर? यस. ग्रेट. अच्छा, एक सवाल आ रहा है कब से, कि विच रेजिमेंट डू यू बिलोंग टू? ओके, चेन्नई में भटकेंगे, मसूरी में पता चलेगा. देख रहे हो? क्या बात है. ये रेजिमेंट वाला क्वेश्चन कहीं चला गया ऊपर. हाँ, विच रेजिमेंट डू यू बिलोंग टू? I belong to the Army Ordnance Corps. It is the logistics division of the Indian Army. I did my like all the ordnance officers, all the service officers, they do 1.5 years of cross attachment with the infantry unit. So you guys already know I did it with the Jat regiment, and presently I am in Ordnance Corps and I am posted here in Pune itself. So I'll meet you someday. Yes, very soon. ओके. सो आईएमए के बारे में बता रहे थे, कुछ किस्से सुनाओ उधर के भी, बड़े हो गए हो. बड़े किस्से सुनाओ कुछ. बड़े किस्से सुनने हैं तो आईएमए इज लाइक, टेल अस अबाउट मसूरी नाइट्स. यार मसूरी नाइट्स, ओके, मसूरी नाइट्स, आई टेल यू व्हाट इज मसूरी नाइट्स. मतलब पुणे वालों को 10 डिग्री में ठंड लग रही है ना? नहीं. ओके. देहरादून, मतलब we trained in Pune, so we were quite comfortable with this kind of environment, with this kind of weather, and we reached Dehradun in January.
in Jan 2018, no 17, I joined IMA. So that was obviously a different kind of. मैं तो हूँ दिल्ली वाला, but देहरादून is still a level up. 3 साल ऐसे भी पुणे में 3 रहे। साल पुणे में आ गया था, तो देहरादून was quite chilly for us. तो हमें बोला गया भाई today we'll have Mussoorie nights. What is Mussoorie nights? So we go on to a collective place. पूरे हमारे सारे coachmates को there is a place called ऐसे battalion area बोलते हैं, हर battalion का एक designated location होता है where which is supposed to be for official training purposes and the Mussoorie nights as well. तो वहाँ पे हमें बुलाया गया. We were in normal अपने like PT dresses like shorts and t-shirt, and then all of a sudden we are told, okay, take off your t-shirts. ठीक है, we took off the t-shirts. Take off your vest. Okay, we took off the vest. I'm sorry if it is मतलब obscene तो sound नहीं, बस वो हनीमून वाले कपल्स ना देख रहे हो. हाँ, तो and then the next thing, take off your shorts. अब हम तो एनडीए वाले हैं, ठीक है, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो वो भी हो गया. Now we start doing the push-ups and it's like some 1 or 2 degrees in देहरादून की रात में. और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्टर था, he got one full bucket of water और एक उसने छोटा सा मग रख लिया अपने पास. Whosoever doesn't do the push-up, he'll count, and whosoever misses the count, so what he used to do, वो एक मग उठाता था पानी का and he'll pour it on you. Sunday ideas. और फिर वो and he'll not make you do push-up after that. He'll let you just stand. तो ठंड में तुम पहले गर्म हुए, then you're made to cool down and you're just made to stand. और उसके बाद बोलते you can see that light, that is Mussoorie. So that this is the Mussoorie night of IMA guys. Okay. ये मत सोचना कि IMA guys go to Mussoorie and enjoy. ऐसा कुछ नहीं होता है. Yes. So you can have a lot of honeymoon experience being in Dehradun, experience Mussoorie nights, and then come out of the academy becoming an officer. What was your squadron in India? Yeah. My squadron in India was Kilo Squadron. Anybody? Kilo, सुना है. Hunter बहुत famous है. Hunter is like they are called Mazdoor Squad. अच्छा, क्यों ऐसा? Because anytime you visit the NDA का Hunter Squad ना, you will find the cadets doing all the कोई वहाँ पे बंदर बना हुआ होगा. अच्छा. कोई जो है मतलब गड्ढे में होगा, कहीं कोई नाली में रोल मार रहा होगा. अच्छा. Anytime you enter, you can find this. So they are called Mazdoor Squad. अच्छा. And elite कौन थे ऐसे? Like ये तो मजदूर हो गए. Elite ones were the gentlemen squadrons होती हैं कुछ. These are like Bravo. उनको रगड़ा कब नहीं मिलता क्या? नहीं, रगड़ा उतना ही मिलता है. अच्छा. It is like हाँ, थोड़ा सा odd times पे नहीं मिलता. अच्छा अच्छा. संडे है, गेस्ट आ रहे हैं, तो ओके जस्ट छोड़ दो आज. अच्छा. So कौन से है ये gentlemen? Gentlemen squadron is Bravo Squadron, India Squadron, since they are located on the main road. अच्छा. India का ना त्रिशूल मार्ग. Okay. So since guests are around, so they get some relaxation on Sunday after 12 o'clock. Okay. मेरे पापा मजदूर स्क्वाड्रन में थे. पता नहीं लगा. आज पूछूंगा. वैसे हंटर वाज अर्लियर कॉल्ड द होटल स्क्वाड्रन. ओह, तो पता नहीं फिर होटल में होंगे फिर. क्या खाना बनाते थे? पूछता हूँ. हाँ पापा अच्छा खाना बनाते हैं वैसे. There is a very interesting मतलब story ना. I'll tell you sometime later. For the next thing. Okay, so someone is asking कि free time में क्या करते हैं? बेटा सोते थे. इंडिया वालों को मत पूछो ये. इंडिया वाले को 5 मिनट में सो जाते हैं और कुछ नहीं करते फ्री टाइम में. अच्छा, आईएमए में क्या करते थे? आईएमए में मतलब सिंस आई वाज फ्रॉम इंडिया तो हमें बहुत फ्री टाइम मिलता था आईएमए में. अच्छा, सो द ट्रेनिंग पैटर्न इज डिफरेंट फॉर इंडिया वाले एंड ट्रेनिंग पार्ट इज सेम, जस्ट योर स्पीड इज मच मोर. हाँ, वो तो होगा ही. सिंस 3 साल तुम यहाँ हो. हाँ. तो व्हेन यू गो देयर इन आईएमए एंड सिंस मतलब द डायरेक्ट एंट्री एंड टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर देयर, तो you already have an edge over them. Physical standards बन चुके होते हैं. Something which they do in 15 minutes, you will do in 5 minutes and sleep. So, that's good.
and sleep. Acha. Yeah. So sleeping was a privilege over there. No, it was not a privilege. You can choose between food and sleep when you're training in NDA. Take it. If you got time, you can either go to mess and have food, or you skip your meal and sleep. Acha. So, what is your preference? So what we used to do, हम अपने room में Maggie biscuit. There's a term called BMR. BMR. Okay. Biscuit Maggie. रसना. रसना. तो अच्छा मुझे रम लगा बट ठीक है. नहीं यार. So that biscuit Maggie Rasna is always supposed to be there in your cabin. Okay. So that you can survive. That's your balanced diet. अच्छा so ये outside life नहीं होती थी उधर मतलब जब संडेज को लिबर्टी मिलती थी. होती थी मतलब from NDA you're all suppose you can go to Liberty at a some very restricted places. तुम पुणे में कहीं भी नहीं घूम सकते हो. Most of the places are out of bound. नहीं ये Phoenix में तो हाँ Phoenix मतलब जनरल जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे ये दिस कोरेगांव पार्क एंड शनिवार वाड़ा all these places were out of bound. Okay. Still don't know the reason. शनिवार वाड़ा क्यों भाई? पता नहीं. No idea. नहीं ठीक है ऐसे ही नहीं जाते हो. हाँ. Your experiences when you wore the 2 stars on your shoulder. Okay, I'll send you this photo. I have. Something related to women entry, if you know. A lot of female candidates have joined. I can't comment upon the training part since I haven't trained with them. But unfortunately, yeah. अब मैं इंडिया जाता तो कर लेता. थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया मैं. हाँ. तो मतलब with whomsoever I have served, my seniors, some of the juniors, मतलब the zeal and the enthusiasm in the women officers to compete with the male counterparts is unmatchable. They do not want that the world questions them, that they do not want that they become a burden on the organization. They want since they have fought their cases regarding permanent commission in Supreme Court, so they want since अब हम काम भी वैसे ही करें, we are बाद में कोई question ना हो. So and actually I see this most of the aspirants whom I am talking to, they don't want to be हमें ऐसा मत treat करो कि हम लोग कुछ अलग है. And it is happening for the मतलब fortunate part in OTA. Earlier you used to have different training things. Companies बोलते हैं वहाँ पे. Different companies for the ladies. For the LC companies बोलते थे, but now it is not there. Okay. You train together now. अच्छा. We started with last 2-3 courses they've started. So and it is a good thing. Even in the services when I've seen the lady officers working, so their technical acumen and their ability to handle pressure is and the most important thing, their ability to take a wise decision is sometimes much better than the male officers. Yeah, it is said that women are 3 years ahead of you. Yes. And generally in the males you will find कि कोई decision लेना है so they'll take it in 2 minutes, whatever is the best possible option, they'll do that. But the women, they'll think over. Think of this life, next life, and the उनको 2 minutes में नहीं लेना है. They'll take their 2 hours, but whatever decision they'll take, it will be something very deep. Yeah, exactly. So that is agreed. You woman power. So I have a friend जो अभी OTA से निकला है, and मैंने उसके फोटोज देखे. ही हैज ट्रेन्ड विद अ लेडी ऑफिसर एज वेल. मतलब दोनों एक साथ पास आउट हुए, तो दोनों अभी अच्छे दोस्त हैं मेरे. So sometime I'll get them also. So you will get to know more insight about how women are trained. And did you play any prank on each other in the academy? ये तो होता रहता है. कोई किस्सा? सीनियर्स पे ज्यादा होता है. मतलब जूनियर सीनियर्स पे करते हैं. हाँ सिंस क्योंकि भाई सीनियर ज्यादा तंग करते हैं. तो once it happened that one of our seniors, we were in I think first term में थे, and one of our 6th term seniors, he came to us. He gave some work to a 4th termer. 4th termer came to me कि भाई
XYZ सर ने बोला है, वहाँ से जाके उनके लिए गेट समथिंग पैक्ड, सम फूड थिंग, एंड दैट कैफे वाज लाइक, हमारा मन नहीं था जाने का, तो वी वर जस्ट सिटिंग, हम बाहर बैठे, वी जस्ट वेस्टेड आवर टाइम, आराम से घूमे फिरे कि भाई सीनियर ने काम दे दिया, अभी तो कोई पकड़ेगा नहीं। उसके बाद हम वापस गए एंड यू लाइक सर दैट कैफे वाज क्लोज्ड, ओके दैट कैफे वाज क्लोज्ड, टेक मोर मनी, गो टू दैट कैफे एंड गेट इट। हम गए, वी वेंट टू मेस, वी हैड आवर फूड, वी डिड नॉट गेट हिज, नहीं लाएंगे, वापस आ गए। वो भी बनता। नहीं सर, दैट कैफे इज आउट ऑफ बाउंड सर, वी वर गोइंग एंड द ड्रिल उस्ताद कॉट अस, उसने हमें रगड़ा दिया। दैट सीन वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड यार, ये मतलब अभी तक क्या चल रहा है? एंड ओके, यू गाइस डिड नॉट गेट, नो सर दैट कैफे वाज क्लोज्ड, यस ओके, बोथ ऑफ यू गो एंड चेंज टू पीटर इट एंड कम। अब रात के 11:30 बज रहे हैं एंड वी वर फुली अवेयर कि ये इतना, यू नो, दिस सीनियर इज नॉट, ही विल नॉट टेक सो मच ऑफ पेन कि वो अपने कमरे से बाहर निकलेगा टू कॉल अस अगेन। वी डिड नॉट गो टू हिम, वी जस्ट वेंट, मैं बोला जो होगा सुबह देखेंगे, आज सोते हैं। तो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू होती रहेगी यार, ट्रेनिंग का तो एनी मिनट इज नॉट मिस्ड इन द एकेडमी, सो व्हाटएवर टाइम, दैट इज द सर्वाइवल टैक्टिक्स, जो भी अभी जाएगा ना याद रखना। you will have your own memories. मैं तो सुनता रहता हूँ। अच्छा, now because most of them are preparing for NDA and they are in just 11th, some of them are in 12th, तो अभी जैसे बोर्ड्स आने वाले हैं, 11th के फाइनल्स आने वाले हैं, इनका 12th स्टार्ट हो। So as you have done your NDA, many are asking, काफी सारे के क्वेश्चंस लिखे हैं, there's a public demand क्वेश्चन कि भाई किस तरीके से हैंडल किया बोर्ड को और एनडीए को, क्योंकि एनडीए में 600 मार्क का जीटी होता है ना, हिस्ट्री पूछ लेता है, ये अकबर के जूते का नंबर क्या था, है ना, तो फालतू फालतू सवाल पूछते हैं, बट देन पढ़ना तो पड़ता है। तो हाउ डू यू कोप अप विद द 600 मार्क्स? 300 मार्क्स तो चलो बैलेंस हो जाता है मैथ्स में, वो करते हैं हम तो हाउ डिड यू प्रिपेयर? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बेसिकली? रेसिपी मिल रही है, सुनो अच्छे से, नोट करके रखो। एनडीए का व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन मतलब when I was in 12th, while appearing, when I appeared for the NDA exam, so I could not make it. Okay, first attempt. First attempt, I could not make it. And what I realized was that I studied a lot. अच्छा, I studied what is not to be studied. हाँ, NDA का कल हमने वही किया था। एनडीए का जो क्वेश्चन पेपर है, इफ यू गाइज हैव सीन इट, तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला है, इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड, इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड फॉर अ साइंस गाय, फॉर अ ह्यूमैनिटीज गाय, अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर अ कॉमर्स गाय। एग्जैक्टली, ठीक है, तो 600 इज द 600 का मार्क्स का होता है आई गेस, एंड 300 इज द मैथ्स वाला पोर्शन। मतलब अभी आजकल व्हाट इज द कट ऑफ? 350 के आसपास ही चल रहा है वो, वही है, हाँ, बचपन से वही है। हाँ, तो 900 में से यू हैव टू स्कोर ओनली 350, प्रॉब्ली 400। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू जस्ट घोटोफाई एवरी, यू नो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सब कुछ। थोड़ा बहुत यू नीड टू बी अवेयर। if you are a science student, you will definitely be aware ki you will definitely prepare well for the physics, chemistry and the bio part. If you are a humanities student, तो you will be very much aware तुम्हारे लिए history, geography, polity वाला portion easy होगा, economics वाला portion easy होगा। ठीक है, current affairs anybody, वो सबको करना ही करना। ठीक है, that is a place जहाँ पे if you know something, battlefield, you know it। और ह्यूमैनिटीज वालों को अगर मैथ्स का इशू है तो मैथ्स, दैट इज सम, यू नो, आई थिंक ह्यूमैनिटीज में ऑप्शन होता है, बट ज्यादातर नहीं लेते हैं। मैथ्स, विदाउट मैथ तो यू कैन नॉट डू द एनडीए, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी सबको। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, फॉर द साइंस स्टूडेंट, इट्स सिंस दे हैव द मैथ्स, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट फॉर द बैलेंस ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज वालों के लिए इट इज समथिंग, यू नो, अनइक्वल बैटलफील्ड। वो अपने बोर्ड्स में भी, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स होता है किसी का आई थिंक इसमें भी कुछ होता है ना, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ऑप्शन होता है, बट कोई नहीं लेता है यहाँ पे। तो जो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड्स, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन दैट एंड
have your, जो भी पढ़ रहे हो यार, don't just study it for the purpose of giving an examination. Study it for the purpose of understanding it. ताकि 5 साल बाद 10 साल बाद भी if you just happen to cross that path, तो तुम्हें याद रहे. तो जब ऐसे पढ़ोगे, भाई साहब हमारा क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर देख रहे थे और उन्होंने बैठ के नोट्स बनाए. So that should be there. मतलब if you study something ना एक point of time पे, तो बाद में भी याद रहता है and वो इंटरेस्ट भी आता है. तो वैसे तुम पढ़ोगे ना, बोर्ड्स के लिए वैसे पढ़ोगे, तो तुम्हें अलग से ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं कुछ, क्योंकि एनडीए का सिलेबस इज नॉट समथिंग डिफरेंट. इट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ 12th पास आउट गाय. ठीक है, तो अपने बोर्ड्स पे फोकस करो. ऑल दोज हु आर इन 11th एंड ऑल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड्स, माय सजेशन वुड बी फोकस ऑन योर बोर्ड्स. ठीक है, उसको तैयारी करते, उसकी प्रिपरेशन करते करते यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एनडीए एग्जाम एज वेल. यस, जो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी वाला प्रिपरेशन होता है इन द लास्ट 2 months 3 months, that is required for refreshing your mind and giving just streamlining your thing. That is the thing. But on a broad guideline, I'll give prepare for your boards. Okay, so I hope those who are asking about the balance between board and NDA it is clear. है ना, बोर्ड की तैयारी करो, उसके साथ साथ जितना अपन क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो. ठीक है, 1.5 घंटा दिन में, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक क्लास में ही हो जाता होगा आप लोगों का. बाकी का टाइम जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, मैथ्स तो आप कर ही रहे होंगे स्कूल में. दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड. नाउ थोड़ा सा इक्वेशन बिगड़ता है जब जेई भी आ जाता है. नाउ सिंस आई हैव क्रैक्ड जेई एज वेल, ऐसे ही लक बाय चांस. तो उसके लिए ऐसा है कि अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लिया ना आप लोगों ने जेई के लिए, अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, करीब करीब मैं बोलूंगा 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस सेक्शन होता होगा. आप लोगों को पता है देयर इज अ मिसलेनियस सेक्शन. मिसलेनियस सेक्शन के लेवल के होते हैं, इट इज नॉट रेगुलर एक्सरसाइज के लेवल के. मिसलेनियस सेक्शन के 70% क्वेश्चन होते हैं. ठीक है ना, तो अगर आप 70% भी अच्छे से करके आते हो जेई में, अगर आपको आईआईटी नहीं जाना है, एनडीए ही जाना है, जेई में ठीक ठाक स्कोर करना है, तो हो जाता है. तो बोर्ड्स के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, जेई के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, और एनडीए के लिए भी आपको एनसीईआरटी करनी है. सो दिस इज हाउ अ बैलेंस इज मेड. मोर डिटेल टाइम टेबल इसके लिए क्या करना है दैट आई विल डिस्कस. ठीक है, कुछ से सुनने दो अभी हमें. ठीक है, अभी ये 4-5 बार आ गया था इसलिए. नाउ अबाउट एसएसबी. नाउ मेनी पीपल, ये पता नहीं एसएसबी का हवा बना हुआ है ना कि इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. यू क्रैक्ड इट इन योर फर्स्ट, आई क्रैक्ड इट इन माय फर्स्ट, है ना. तो आई नेवर फेल्ट कि एसएसबी इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. बट जो भी है, बाद में तो नहीं हो पाया. तुमने 3 बार कर रखा है, तो थोड़ा सा गाइड कर दो कि क्या होना चाहिए. See, when you go for the when you are going for the SSB, ये सोच के मत जाना कि that I am going to appear for an interview for the purpose of seeking a job. It's not a job. Okay, you are just going there to present yourself and you will be tested on, मतलब एसएसबी की जिसने किसी ने कोचिंग दी होगी कभी तो बताया होगा कि देयर आर थ्री एंगल्स ऑन व्हिच यू आर जज्ड. योर थॉट्स, योर एक्शंस एंड मतलब योर वर्ड्स. ओके, सो कभी मतलब ऐसा यू कांट जस्ट अपने दिमाग में अगर तुमने किसी ने बैठा लिया है कि आई एम गोइंग फॉर अ जॉब वेयर आई, मतलब ये जॉब मेरे लिए जरूरी है, यू विल स्टार्ट अपीयरिंग डेस्परेट इन फ्रंट ऑफ देम. ऐसा इतना प्रेशर लेके कभी नहीं जाना है. जस्ट गो फॉर इट, मतलब जस्ट गो एंड एंजॉय दैट एक्सपीरियंस. एसएसबी में आई ऑलवेज से दैट अगर सिलेक्शन हो ना हो, दैट डज नॉट मैटर. एसएसबी itself is an experience which everybody should take because उससे इंसान को खुद अपने बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है. Don't you think it is more of way of life, like the way you live? Exactly. Right. मतलब you cannot तुम वहाँ पे you're there for the 5 days. 5 days में you're writing something, you're speaking something, you're doing something, and every time you cannot be conscious of your words or your actions or what you write. Sometimes some people can be कि हाँ जो लिखा है लिखने में you are conscious, बोलते हुए you are conscious, but while acting you cannot be. If you are trying to manipulate somebody, it is seen. ठीक है, the person who's there, he knows it. So just be natural, let it come out, and
वो जो 15 OLQs का लिस्ट आई गेस देखा होगा सब लोगों ने, ठीक है. Those 15 OLQs are not something which you cannot develop or you do not have. Everybody has it. Everybody has got communication skills. Everybody has got organizational skills. Organizational skills is not something very big. Organizational skill is something very छोटा सा काम की अगर तुम्हारे मम्मी ने बोला है कि बेटा जाओ बाजार जाके ये सामान लेके आना है, तो हाउ यू प्लान की ओके मैं पहले कहाँ जाऊंगा, उसके बाद कहाँ जाऊंगा, ये सामान मुझे कहाँ मिलेगा, हाउ कैन आई डू दिस टास्क इन अ वेरी शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम पॉसिबल. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दैट यू नीड टू हैव. तुम्हारे पड़ोस में कोई आया है नया एंड ही वांट्स टू सिंस आई हैव कम टू पुणे एज अ न्यूबी, मैं पुणे में नया आया हूँ, मुझे आई अप्रोच वन ऑफ यू कि मुझे पुणे घुमाओ, तो मुझे कहाँ कहाँ कैसे ले जाओगे. घुमाना सर को. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. ठीक है सर, अब ये तीन महीने पहले ही आया बस. सो डेफिनेटली, है ना, कभी जाएंगे तो सर को घुमाना. ओके, सो वन क्वेश्चन अबाउट डिस्ट्रिक्ट नेशनल, ये वाला मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन वन हु डिड इन वन गो एंड वन हु इज फेसिंग फेलियर्स. ओके, किसी ने एक बार में क्रैक किया है, किसी ने मल्टीपल टाइम्स लिए है. व्हाट इज द डिफरेंस? रिपीटर बनने में कोई फर्क पड़ता है क्या बेसिकली? आई सी मतलब रिपीटर में आई डू नॉट फील देयर इज एनी डिफरेंस दैट द मतलब द असेसर्स देयर से वो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं. whenever you go it is a fresh judgment. They see the people who are judging you, they see you, they are different every time you are appearing in front of them, so you are a fresh case for them. ऐसा कुछ नहीं है कि they see repeaters as a different person and a fresher as a different person. But yes, when you go for NDA, so there would be certain expectations, but when you're going as a direct entry or a TGC, there would be different expectations. और आफ्टर ग्रेजुएशन it is आपकी very मैच्योरिटी natural. लेवल थोड़ी ज्यादा Maturity level बढ़ जाता है. ओके, सो ये सब तो हो गए. नाउ वेरी लेजिट क्वेश्चन. ये आर्मी लाइफ इज लाइक दे से इट इज अ 24/7 जॉब. You have to be at your toes, है ना? So in this situation, how easy is it for you to maintain a work-life balance? Your family, your friends, and whosoever your close ones are. So how are you maintaining that, or how one should, make up his mind or prepare himself mentally to face this? See, on this aspect, you will find even in the organization, you will find different officers having different views. What I believe and what I've been trained for is that my country comes first. The men I command, their comfort comes Always and next, every time. and my own comfort comes last, always and every time. That is what I've been taught. And the second thing that I've been taught is my family is not just restricted to 4 people. It is extended to 4 lakh people in this world. So agar how I maintain my work life balance, I'm sitting here in Pune, my parents are there in Delhi, है ना? So but there are people to take care of them in Delhi. And yes, giving time to family is concerned, ऐसा नहीं है कि फौजी life is 24/7 you are busy. You get time, you get enough time to make a call to your loved and near and dear ones. Yes, it may not be a scheduled fixed thing कि तुम रात को, it's not a 9 to 5 job कि 5 बजे शाम को फ्री हो ही जाओ, ठीक है. You have the work pressures. If you are in field तो वहाँ के pressures अलग हैं. When you are sitting in peace, you have an office job, but यहाँ के भी pressures are different, ठीक है. But don't worry, you get enough time to manage your work, professional work, to manage your personal work, and to manage your the adventures of life. You get enough time and enough facilities as well, okay. When you join as officers, you have got beautiful messes, you've got beautiful guest rooms. You don't have to worry कि मैं किसी city में मुझे जाना है तो where do I stay, whom to contact. So even that part is taken care of to your luxury and your leisure time. Okay, so I think he has beautifully explained everything, right? From how to prepare yourself to get into NDA, what to do in NDA, how is IMA, and his experience at LAC. पीस में तो खैर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, सिटिंग वर्क होता है, ठीक है, अलग प्रेशर्स होते हैं उसके. सो आई थिंक हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? ओके,
How do I handle stress and pressure? This is the last question. ठीक है? इतना ज्यादा स्ट्रेस तो इसी क्वेश्चन पे दे दिया यार. ठीक है. देखो यार, in life, whether you are in Fauj or not, whether you are working in a corporate, job, or whether you are just a student, everybody has stress, everybody has a pressure. तुम्हारे ऊपर भी सब लोग प्रेशर अभी पेरेंट्स भी डाल रहे होंगे, तुम्हारा खुद का भी होगा कि मुझे खुद से करना है कुछ. बट लाइफ में never get, you know, restricted by your pressures. Take these stress, take these pressures as your opportunities. Okay, these are not something which will limit you. Under pressure you can perform much better, you never know. ठीक है, उस प्रेशर को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना है. क्योंकि यार मेरे पापा के एक्सपेक्टेशंस ये हैं, या मेरे सीनियर के एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक कि भाई द पीपल हेयर, दोज आर माय सीनियर्स, दे फील कि ये इंसान अच्छा कर सकता है लाइफ में, दिस टास्क हिल डू इन अ बेटर मैनर. So that, yes, adds pressure to me, but it also gives me, opportunity कि मैं और अच्छा करूं. ठीक है, तो channelize those channelize that pressure into a positive energy and use it constructively. Yeah, science ka law. Energy cannot be created, nor it can be destroyed. It can be changed from one form to another, and that's the way of life. That's it. That's how it works. So thank you, Shubham. You have given a great insight into army life. They are exposed to this for the first time, and being almost of the same age group है ना. अभी अभी कोई कर्नल वो सब बैठे होते हैं या मेरे पापा बैठे होते तो they would have been telling the stories of their times, good old days. हम 5 किलोमीटर स्कूल चल के जाते थे, है ना, जूते छील जाते थे. So we have got to know the real things. Okay, one last question, एकदम last, ठीक है? अरे मुझे भी जाना है. Okay, this is how people's perspective changes after seeing you in the uniform. लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है आपको यूनिफॉर्म में देखे. लाइक ही इज बेसिकली कंपेयरिंग यू. यू आर कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड एंड देन दैट टाइम यू आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म. तो उसके बाद जब यूनिफॉर्म में दिखते तो हाउ इट चेंजेस. मतलब just to start with a funny part, when I got commissioned and I reached my school, no, when I got selected for NDA and then I went to school ना, मुझे बहुत क्रेज होता है कि I'll go to school, वहाँ पे मैं जो है I'll meet my teachers. So I meet my physics teacher of class 12th. मतलब उनको लगता था I'm a hopeless case, मेरा कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में. ठीक है, because I never used to attend physics classes. So and I walk in, ma'am, I'll be joining NDA soon, and she's like, she is still very, doubtful. Will you be able to do it? Will you be able to sustain these 4 years? Okay. Then 4 years later, I got commissioned, and I see, जैसे अभी मैं lecture ले रहा हूँ, I took a lecture in my school, and then my same physics teacher suddenly enters, and she's like, "Oh my God, you did it!" So, yes, after seeing you in uniform, people's expectation, like you feel, people start seeing you differently. You feel कि हाँ भाई, they feel ये जिम्मेदार हो गया है, responsible हो गया है. And obviously the aura which builds around with the uniform. See, the near and dear ones जो तुम्हारे parents हैं, relatives हैं, for them you will not change and you should not change. Let that uniform का aura be felt to them. You never make it feel by yourself that you have changed. Okay, रखो अपने अंदर, but never let it become a way of disconnecting yours, मतलब with the people. So perspective, yes, it changes for the people because people start treating you differently. People start seeing you more maturely. People do not, see you, take you lightly. They, अब obviously यार तुम लोग भी यहाँ बैठ के बकवास सुन रहे हो मेरी ना, मैं नहीं होता यूनिफॉर्म में तो नहीं सुनते, राइट? मुझे सुनते हो रोज. अरे तुम तो यू आर तो गुरु. Teacher is always a notch higher.
right? So on behalf of all the staff and student, again formality कर रहा हूँ, थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है? So I would like to thank Shubham sir. He's a great friend. He's a warrior. And मेरे को नहीं लगता कि 26 जनवरी से कोई अच्छा दिन हो सकता था ये सेशन के लिए. So from Parsarthi, I would like to give him a token of love. Thank you so much. Yeah. दारू नहीं दिया ऐसे मत देखो. Hello guys. Thank you very much. Chalo, see you then. See you tomorrow. Thank you very much. Jai Hind.